So in this series, we are going to learn how to get ready for an interview. So if you watch every single video and take down note, trust me, it will help you crack your interview. So let's get started. So in this first video, we are going to learn about what is financial market. Then we'll discuss about the classification of market factors. There are various factors that influence financial market and the risk associated with the financial market. So these are the things that we are going to discuss in this series. Okay, so the first thing, let's understand what is financial market. Financial market kya hai? So financial market is a platform where money is being collected from the surplus unit and lend it to the deficit. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर है, द वन हु हैज एक्सेस ऑफ मनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास इफ यू आर इफ यू आर बिजनेसमैन या आप जॉब करते हो, सो वॉट एवर यू आर वॉट एवर इज योर अर्निंग, उसमें से आप कुछ पोर्शन आप एक्सपेंस करते हो एंड द रिमेनिंग पोर्शन जो आपके पास सेविंग बचता है, यू आर इन्वेस्टिंग दैट टू द बैंक। बैंक में इन्वेस्ट करते हो या किसी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करते हो, राइट? So that means when you are investing, I mean that surplus fund, you become the investor. And there are certain companies, government और financial institutions जिनको अपने डे टू डे बिजनेस को या रन करने के लिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसों की जरूरत होती है। सो दैट मीन्स दे आर इनटू डेफिसिट एंड दैट्स द रीजन दे आर बोरोइंग दैट फंड। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास जो सरप्लस फंड था उसको आपने इन्वेस्ट किया, वही फंड को बैंक यूटिलाइज करेगी लेंड करने के लिए, यानी कि उसको लोन के तौर पे कंपनीज, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देंगी, राइट? सो अभी फाइनेंशियल मार्केट क्या है? तो जो इन्वेस्टर्स और बोरोवर उन दोनों को एक साथ पे लेके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, उसी को बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट। सो इफ देर इज अ क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, so you can simply say that financial markets are a platform where individual, business and government can buy and sell financial assets such as stocks, bonds, commodities and derivatives. Okay, so these market facilitates facilitate flow of capital between investors and borrower. Clear? Okay, so next let's move on to the next question. Okay, अभी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड classification of or types of financial market. Okay, तो जो फाइनेंशियल मार्केट है, इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर मार्केट्स, जैसे कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट में क्या होता है? सो कैपिटल मार्केट डील्स विद द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आपको मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि सिक्योरिटीज, स्टॉक्स या बॉन्ड्स जो है, वो एक साल और एक साल से मतलब एक साल से ज्यादा के मैच्योरिटी डेट पे ट्रेड होते हैं, या उसका टर्म जो है वो एक साल से ज्यादा होता है। ओके, उसमें और एक खास बात याद रखनी है कि कैपिटल मार्केट में बोथ बॉन्ड्स एंड इक्विटीज आर ट्रेडेड। ओके, एंड द पब्लिक पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज हाई, राइट? एंड also the risk involved is high as compared to money market. So let's understand the second type of market, money market. Okay, यहाँ पर एक साल तक या लेस देन 1 ईयर के इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। सो फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी विद द हाई लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या है कि मनी मार्केट में ओनली बॉन्ड्स आर ट्रेडेड। ओके, so of course the public participation is very less as compared to capital market, and also risk involved is less as compared to
कैपिटल मार्केट। ओके, सो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स ही बोलेंगे उसको हम लोग, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स। ओके, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मनी मार्केट। ओके, नेक्स्ट मार्केट इज डेरिवेटिव्स मार्केट। अब ये डेरिवेटिव्स मार्केट में all futures, options, forwards, and swap, these type of instruments are traded. Okay, और चौथा टाइप है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वेयर डिफरेंट करेंसीज आर ट्रेडेड। ओके, टू डिफरेंट कंट्रीज के जो करेंसीज है उसको ट्रेड किया जाता है। ओके, सो to answer this question, if you know your interviewer asks you question, what are the types of financial market, you can simply say that the financial market can be broadly classified into four markets. One is capital market, where the long-term securities such as stocks, bonds are traded. Money market, dealing with short-term debt securities with high liquidity and low risk. Okay. Next is derivatives market. So it involves contract whose value is derived from the underlying assets or the index. Okay. Then if they ask you examples, then you can say futures, for options, forwards, and swap. And then last one is the foreign exchange market, where the different currencies are traded. Okay, all right. Let's move on to the next question. What is primary market versus secondary market? Okay, अभी प्राइमरी मार्केट जहां पर फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशूड और सेल्ड टू सोल्ड टू द इन्वेस्टर बाय द इश्योर। ओके, यानी कि इसमें फर्स्ट टाइम कंपनी सेल्स दैट सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर। ओके, इन द प्राइमरी मार्केट, and who decides the price? Of course, the company decides the price of that security at the first time. Okay, what is the secondary market? So in the secondary market, where existing securities are traded amongst the investor, मतलब जो security already market में available है, exchange पे available है, उसी को trade किया जाता है। Okay, but इसपे who decides the price? Of course, यहाँ पे demand and supply will decide the price. Okay, so one investor sells to the another investor, and the price is determined by the market. Okay, demand and supply will decide. So if interviewer asks you that question, okay, what is the difference between primary and the secondary market, you can say that primary market में where the newly issued securities are bought and sold between the issuer means companies or government who borrows the money, and the investor. Okay, in the secondary market, where already issued securities are traded amongst investor without involvement from the issuing company. Okay, all right. Let's move on to the next question. What factors influence financial market? Okay, so there are several factors, of course, that impacts the financial market. So like economic conditions, okay, economic indicators we can say, then gross domestic GDPs, then inflation, geopolitical events, monetary policies, right, set by the central banks, then corporate earnings and investor sentiment. Okay, so these are the factors that influence the financial market. Okay, so the price will there will be price fluctuations, and these are the factors will decide the price of that security. Clear? Okay, let's move on to the next question. How does the risk play a role in the financial market? Okay, अभी इसमें रिस्क, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में द रिस्क इज हाई एज कंपेयर टू मनी मार्केट। ऑफ कोर्स, क्योंकि मनी मार्केट में लिक्विडिटी काफी अच्छी है, एंड सो दैट रिस्क इज लो एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रिस्क कैसे अपना रोल प्ले करती है इन द फाइनेंशियल मार्केट। सो ऑफ कोर्स, रिस्क इज ऑलवेज देयर इन द फाइनेंशियल मार्केट, बट
the investors assets and सबसे पहले आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा बिफोर यू इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ द सिक्योरिटीज, राइट? सो इन्वेस्टर्स assess and manage the risk based on the factors such as market volatility, economic conditions, geopolitical events, asset specific risk, and of course there are several tools or there are several techniques through which you can minimize that risk, of course, right? So diversification, I mean, you can invest into different sectors, okay, different portfolios, right? Then you can hedge your risk. You can risk assessment tool. There are various risk assessment tools in the sense. Definitely, you'll have to first do your analysis before you investing into any security. So this is how you can minimize your risk or manage or mitigate the risk. Okay, so you can simply say that the risk is inherent in the financial market. The investor assess and manage the risk based on the factors such as market volatility, economic conditions, geopolitical events, and asset specific risk. So diversification, hedging, and risk assessment tools are used to manage and mitigate the risk. Clear? Okay. So let's move on to the next question. What is the role of regulators in the financial market? So सबसे पहले हम ये देखते हैं कि who are the regulators? Of course. So कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। वैसे मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स इट इज अ एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, राइट? तो इसमें ये जो दो इंस्टीट्यूशंस है plays a vital role, managing, regulating the financial market. Okay, so uh, because of these two institutions, they can protect the interest of the investors. Okay, जहाँ पे कोई fraudulent activities होती है या misguide होते हैं investors या उनको you know they are so basically in order to protect the interest of the investors, these two institutions plays a vital role. Okay, so to answer these questions, you can simply say that the regulator oversee financial market to ensure fair and transparent operations and maintain market stability, protect investors, and prevent fraudulent activities. So they enforce regulations, set standards, and supervise market participants. Okay, so this is how you can answer this question. So these are all the basic questions that may be asked on the financial market. So let's conclude here and let's meet into हम अगले वीडियोस में मिलते हैं. Thank you.